वेरी प्लीज्ड अबाउट इट कि कम से कम अब हम एक बैटिंग ऑब्सेस्ड नेशन से बॉलिंग ऑब्सेस्ड नेशन बन गए. फॉर अ T20 वर्ल्ड कप यू वांट टू टेक प्लेयर्स हु आर इन रियली गुड फॉर्म. इफ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर इन वेरी गुड फॉर्म, दे शुड एब्सोल्युटली बी पिक्ड फॉर द T20 वर्ल्ड कप. आप जब कमेंट्री करके वापस जाते हैं तो आप क्राउड के वहां से जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द स्टेडियम एज वेल. अब अगर कुछ लोग वहां पर खड़े होके हैकल कर रहे हैं, हैकल भी नहीं, अगर आप हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बोलेंगे जो मैं नहीं बोल सकता पॉडकास्ट पे इस तरीके की, तो आप क्या आप करते हैं कि आप सर नीचे करके चले जाएं. कल इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है, व्हाई इज इट ऑलवेज कि आप मेरी और शायद अफरीदी की लड़ाई दिखाते हो? व्हाई? देयर आर सो मेनी अदर फाइट्स दैट हैज हैपेंड. शो समथिंग पॉजिटिव. ये जो शब्द का इस्तेमाल किया गया था ना, पनौती, इट इज़ प्रॉब्ली द वर्स्ट वर्ड दैट कुड हैव बीन यूज्ड अगेंस्ट एनीवन, particularly a prime minister of this nation. जो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट हमने दिया, वो मेरा विजन था. Our own MLA from my own constituency wrote a letter to MHA saying that there should be a CBI inquiry against me. अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना पैसा खर्च किया? मतलब कोई नया पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आपने खर्चा नहीं किया, कोई आपने डस्ट सोल्यूशन का रोड पे जो डस्ट है उसके लिए कोई काम नहीं किया, कोई आपने स्प्रिंकलिंग मशीन्स नहीं खरीदी. कहाँ जा चुकी है दुनिया? ऐसा नहीं है कि दिल्ली सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है, बाकी सिटीज़ भी हैं, लेकिन पीपल टेक मेजर्स. दिल्ली के क्या, इस देश की जनता को भी समझना ज़रूरी है कि फ्री भी पॉलिटिक्स विल टेक अस नोवेयर. फ्री कुछ भी नहीं मिलता. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to the ANI podcast with Smita Prakash. Thank you for liking and subscribing and for sharing with people who you think will benefit from these conversations. My guest today is cricketer turned politician Gautam Gambhir. He's known for his sharp takes, his no-nonsense attitude, and ever ready to make a point if he thinks it's necessary. Gautam Gambhir played the crucial role of stitching up India's win in the 2007 World Cup 2020. 75 runs from 54 balls, and 2011 Cricket World Cup, 97 runs from 122 balls. Under Gambhir's captaincy, the Kolkata Knight Riders won their first IPL title in 2012 and then again won in 2014. He was the only Indian to have scored hundreds in 5 consecutive test matches. There are many firsts to Gautam Gambhir's cricket career. He's been conferred the Arjuna Award, India's second most important sporting award, and has received the Padma Shri, the 4th highest civilian award. Gautam Gambhir joined the BJP in 2019 and won the general election from the East Delhi constituency, defeating his rival from the Aam Aadmi Party, Atishi Marlena, and the Congress Party's Arvinder Singh Lovely. Joining me in this conversation is my colleague Ishan Prakash. So let's get cracking and speak with the one and only Gautam Gambhir. Thank you so much for being part of the podcast. Can I call you by your first name? You can call me by any name. Okay. So thank you, Gautam, for being here. I know as soon as this airs, there'll be a whole bunch of people who'll say, Dekha, Smita has got Gautam Gambhir on the show. You know, I have to tell you, there's a little bit of a past, which I think even you don't know, Ishan. When 2011 victory you dedicated to the Mumbai blast victims, जब आपने वो किया, तो as soon as you said that, I said, why are you doing this? Why? I don't think Gautam Gambhir should do this, right? There's no need to bring in politics क्योंकि फिर वो पाकिस्तानी कुछ बोलेंगे, फिर it becomes that. So I said this, and there was this legion of Gautam Gambhir fans who got so mad at me, and I was trolled relentlessly. अब मैं उनको कैसे बताऊं that I'm a fan of Gautam Gambhir, but I felt at that moment it will take away from cricket. I said that, but I didn't give any explanation. But उसमें से वो धनाधन मेरी trolling हुई कि she is a Pakistani lover and all that. And sure enough, थोड़ी देर के बाद शाहिद अफरीदी ने बोला what he did. And then we say, see, she is speaking the language of Pakistanis. So today, there'll be those guys who are saying, देखो इतना time लग गया, but then she's got Gautam. Not at all, in fact. So I just want to clear the air between no, you. Absolutely. You have all the right to do it, but trolling and no trolling doesn't bother me one bit, and it should not bother anyone, because I think people live with their belief, and people have all the right to live with their beliefs, and I've always maintained that. Yeah. So now that is
been cleared. So let's talk about Gautam Gambhir, the cricketer, Gautam Gambhir, the politician. So do you want to start with the cricket part, and then I can take on the politician? Now you wear so many hats. I don't even know where to begin. But I want to just rewind a bit. Then the nature of this format is such that the conversation will evolve as it is. Have you But done a podcast before? Never. This is my first. This is your first. Okay. So First. great. Nice. So then So now if- we can roast you, shall we? No, anyways, people roast me, so you can roast me as well. So, No, you give it back in equal measure. That's यही what I तो like. खासियत है आपके बारे में. Satak se, yeah, मतलब I tried. हाँ, controversy's favorite child. On social media. On social media, I have to clear that. You know, but the early 2000s, mid 2000s, 2010, 11, you know, there was so much, we had so much pride that when you used to go out to open and all, you're always a big match player for India. Chahe wo 2007 World Cup PO, 2011 World Cup PO. I mean, you've always performed in big matches. I just want to rewind a bit. I mean, this the final is the big stage. 2 openers are out. You walk in. How did you steady the ship? What was going through your mind? I remember those innings. Every ball, there was sweat dripping from you. आप जो concentration होगा, कमाल का होगा. Tell me. See, I'll tell you one thing. 2007 was my first World Cup of any kind. I missed out on an under 14 World Cup where I was the highest run getter. I missed out on the under 19 World Cup where I was the highest run getter in India. I missed out on the 2007 50 over World Cup where I still believe was probably the darkest phase of my career, where I thought that I was about to give up because I thought that I absolutely deserved to be part of that World Cup team which went to West Indies. And then when most of these seniors decided not to go for the T20 World Cup, the inaugural T20 World Cup which was happening in South Africa, then the selectors had picked a young team. And I remember the first game got washed out against, I think it was Scotland. The second game was against Pakistan, which was my World Cup kind of a debut. Any kid growing up, first time who had picked up his bat wanted to play a World Cup of any kind, that also for his country. So got a duck in that game. So imagine, I still remember walking back to the dressing room. It was happening at Kingsmead, Durban. Walking back after scoring a duck, I said, this journey cannot start like this. And I'm sure it will not end like this. So the second game was against New Zealand and Johannesburg Wanderers. And I knew that it could have been, a lot of people have asked me this question, which was the game, which was the turning point or probably the make or break, or you were under the extreme kind of pressure. And I've said that the game against New Zealand, which was the second game, where I got a duck against Pakistan, my second game against New Zealand. And I remember if I had not scored runs in that game, probably I would have been dropped after that game. So I was leaving my room and I promised myself that irrespective of what happens today, when I come back in my room after the game, I will play this game on my terms. Good, bad, ugly, whether I score, whether I don't score, I will not come back regretting anything. Because a lot of time as a sportsman, and I have to clear this, that a sportsman's life is a very different life and their mindsets are very, very different because you're literally living on the edge. Imagine a batsman who's worked for years and years, his entire life is dependent on one particular delivery. There is no second opportunity. You play a loose shot, there is no looking back. You have to either wait for the entire game and for the next opportunity that might arrive, that might not even arrive. So that is called living on the absolute edge, where your entire career is dependent on one particular delivery. So I promised during that game, and I got a 18 or a 19 ball 50, I think 20 ball 50, and we lost that game. From there on, everything turned. And the World Cup final, which you've spoken about, was against Pakistan. I started my World Cup debut against Pakistan, where I got a duck. World Cup final against Pakistan, and Sehwag wasn't playing, he got injured. Yusuf opened with me. And I remember shutting down everything. We went to the game, and I was very clear about one thing, that till the time I'm there, I think India is going to be pretty much safe. And that is the belief I always had, because I've said that many times, that if you don't have that belief, might as well you should not be picked to play for the country, because you're not only playing for your country, you're representing 140 crore Indians. If you do not have the belief to represent 140 crore Indians, you have no right to be sitting in that dressing room. So that was something which was always there till the last day of my career, till the last day, whether I played for my club, state, country, franchise, that I have the responsibility. When I wear that jersey, I have a responsibility of representing the state, the city, the club, and more importantly, the country. One question I want to ask, because when you were saying about that duck that you got out to, and then you go to play that match, what do you
when you're at the striker's end, at that moment, does that duck come in your mind, do you think that the other No, it's side? it's a very valid question. In fact, not a lot of people have actually asked me this question, and I'll be absolutely lying if I say it doesn't, because I'm a human as well. And if you've started this competition, your first World Cup with a duck, obviously it's going to be there at the back of your mind that what if I fail? But what happens is that you have to live in that moment. All you need to do is focus on that particular delivery. And more importantly, I remember we were chasing around 180, 190 against New Zealand. They had a very good team at that time, very good bowling attack. So when I was actually walking into bat, and I actually again reminded myself what I had promised when I was leaving my room, that I am not going to regret anything. If I want to hit the first ball out of the ground, I will hit it. I'm not going to play this game on any other term on any other person's term. My term will decide what I do, whether I do good, bad, or ugly. I know my entire career is on stake, irrespective. I don't want to have any guilt going back in my room, because even if I don't score runs, at least I'll be able to sleep in peace, because this is what I had decided to do. Sometimes what happens is you start playing for the gallery, you start thinking about what if I fail, what if I don't score runs, what's going to happen. Those things can happen because I'm a human being as well. Every sportsman is a human being. But the most important thing, as I just mentioned it to you, is that when you go back in your room, you've got no regrets, and that is where you can actually sleep and live in peace. The dynamics of playing against Pakistan, it's tremendous pressure on any kid. I mean, when I say kid, I mean any youngster. More so when you're making a debut. And tell me, how did it keep changing as a youngster when you started your career, and then slowly further, like right up till the final? See, I'll tell you another thing. I think as a sportsman, if you particularly ask any of the sportsmen, do they prepare differently when they play against Pakistan? Absolutely not. Because ultimately, the contest is not Pakistan. The contest is between bat and ball. The contest remains the same whether someone is bowling with the yellow jersey on or whether with the green jersey on. Yes, there's a lot of other external pressures, and there will always be. Whether at that time there was not a lot of social media, fortunately, but there was a lot of media pressure, there was a lot of fan pressure and all that stuff. So my first World Cup game was against Pakistan. My first World Cup final was against Pakistan. I remember I played a very, very high profile and a high pressure game in 2011 semi-final, which was in Mohali, was against Pakistan, where both the prime ministers of both the countries were there as well. That was probably the most high profile game which I have actually played. Do you know at that time that they're sitting in the stands? Yes, they came and shook hands with us after the No, national before, anthem. when you're on the ground? Yeah. Absolutely, because I remember when we finished off our national anthems, both the prime ministers shook hands with both the teams. So they were there, and then we knew that obviously the city was completely sealed. No one was allowed to enter the city after 5 o'clock in the morning. Air spaces were shut. Everything was like one kind of fortress. It was like a fortress where, and you know that how media hypes and how when you're playing a World Cup at home, that whatever happens, you can't lose this game. It's not just a game. Yeah, and more importantly, when people turn around and say this, it doesn't matter whether you go on to win the World Cup or not. You cannot lose. Match to jeetna hai. But this is unfair. This is very, very unfair. Honestly, I can share this. But life is not fair, Gautam. I know life is not fair, but मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि winning against Pakistan is important. Winning against any other side is important. True. But winning the World Cup is even more important. No one remembers whether, आज आप मुझे बताओ, how many people remember that what had happened on 14th October this year? No one remembers. Everyone remembers that Australia won the World Cup. Yes. That's the truth. Yeah. People don't accept that. That's their problem, not mine. The reality is, Pakistan se jeeto, Pakistan is a stepping stone towards winning the World Cup. But for us as a sportsman, as a nation, I think people sitting in that dressing room, it doesn't matter whether we win against Pakistan or not. All that matters is that we have to go on to win the World Cup, because that is going to create or give a lot of happy memories to the nation. वो तो ठीक है, but he's not answered that question. What went through your head when you batting and you came in after our two openers had gone down? What went through my head? Yeah, you're in the final, big match. One thing in 2011 that went through my head was, I remember obviously one good thing that has happened, which was not a good thing. See, it was a blessing in disguise for me that by the time I had not even padded up, I was not even ready. Sehwag got out. Sehwag got out and he took a referral. So I got a little bit of 1 or 2 minutes by the time that referral decision had time to get ready. And by the time I realized, I was actually facing Lasith Malinga. So you were padding up while the referral was going on? Yes. Wow. And that's a good thing for me.
not a good thing for the team. You don't want to lose an opener so early on. So sometimes you are not even thinking about the occasion, because when you're waiting for your turn and you know it's a World Cup final of what if I fail. So by the time I had any thought in my mind, I was facing Lasith Malinga, so everything got shut. But when Sachin got out, I remember one thing that came in my mind was that, and this question has been asked a lot of time, and I've answered this, that till the time I'm there, India's winning. That is the belief I always had. Irrespective whether we lose 2 wickets, 3 wickets or 4 wickets. Yeah. Till the time I'm there, till the time I'm batting till the 50th over, India will not lose the game. And I've said that earlier as well, that if I did not have that belief, I had no right to be sitting inside that dressing room and representing my country. Yeah. So that belief never at any stage came down or went down, or there was even the slightest of doubt I had in my mind that, oof, now what? Nothing. Because that is something which I always carried with me, and that probably was my biggest strength. I think all of us had that oof, now what? No, when Sachin's wicket fell. Yeah. I'll be honest with you. I can. A billion hearts just sank, right? Ki, ab kya hoga? Though all of you were there was Sehwag, there was you, there was Yuvraj, there were so many others, right? Our batting order went up till 8, if I'm not mistaken, in that series. No, 7. Raina was 7, and then Bhaji was at 8. Bhaji he could hit though. Harbhajan could but, hit. yeah, at least 10 to mil jayenge, you know. But no. I mean, you needed someone to steady the ship. Steady. There's no doubt about it. And I think that was the most critical innings of that match. Now, mera ye agla sawal, I think you can guess where I'm going with this is, by the end of it, when India won, your innings was sort of overshadowed by Mahi's innings. It was not overshadowed, yes. But this is what I'm asking you. A match-saving innings of yours or a match-winning innings, kahan pe? Do you have that chip on your shoulder? अच्छा, मैं ये एक मैं ही हूँ जो इस बारे में बात करता हूँ. जब ये लोग टैग देते हैं ना अंडररेटेड, कितनी अंडररेटेड नॉक है, कितनी अंडररेटेड प्लेयर है, ये वही लोग हैं जो टैग देते हैं, जो अंडर शोन करते हैं, अंडर वैल्यू करते हैं एंड अंडर अप्रिशिएट करते हैं. नथिंग इज अंडररेटेड, इट इज अंडर शोन एंड अंडर वैल्यूड. दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज. दैट इज वेयर वी आवर कंट्री इज ऑब्सेस्ड विथ स्टैट्स. जब तक आप स्टैट्स का ऑब्सेशन ख़त्म नहीं करोगे, तब तक आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. 12 साल हो गए हैं भारत को वर्ल्ड कप जीते हुए, और वो रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, इट्स अ वेरी बिटर ट्रुथ, आवर मीडिया, आवर ब्रॉडकास्टर, मोर इम्पॉर्टेंटली सोशल मीडिया, एंड इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ब्रॉडकास्टर का. अगर ब्रॉडकास्टर बिकम्स अ PR मशीनरी फॉर सर्टेन इंडिविजुअल्स, then you will never get the desired results. Broadcaster, you're talking about the people who broadcast the matches. Absolutely, those people. Yeah, okay. Absolutely. मुझे आप एक चीज़ बताइए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में 15 लोग हैं, 15 लोग उतनी ही मेहनत करते हैं उस ड्रेसिंग रूम में बैठने के लिए, 15 लोग उतनी मेहनत पसीना बहाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए. लेकिन अगर एक ब्रॉडकास्टर सिर्फ 1 या 2 इंडिविजुअल्स की PR मशीनरी बन के रह जाएगा, तो बाकी 13 शायद वो ओपनली ना बोल पाएँ, लेकिन अंदर उनको क्या फील होगा. सबसे बड़ा गुनाह ये है कि किसी की मेहनत का क्रेडिट किसी और को दिया जाना. हमारे यहाँ पर पिछले बहुत लंबे समय तक यही होता है, और आप जब भी बात करो तो ये बोला जाता है कि हमारे को नंबर्स नहीं मिलते. अगर आपको नंबर्स नहीं मिलते तो फिर आपको कोई ये भी नहीं कहता कि आप इतना ज़्यादा पैसा दीजिए मैचेस को टेलीकास्ट करने का. अगर आप ब्लीड कर रहे हैं तो इसमें खिलाड़ियों की प्रॉब्लम नहीं है. खिलाड़ी पूरा डिज़र्व करते हैं कि उनके परफॉर्मेंस का जो की एप्रिसिएशन जो है, जो उनका क्रेडिट है, वो उनको देना चाहिए और उनको मिलना भी चाहिए. मेरा एक और टेक है इसमें कि कोई आदमी जिसने कभी क्रिकेट बैट नहीं पकड़ा, जिसने कभी 1 लाख लोगों के सामने खड़े होके वो प्रेशर नहीं हैंडल किया, जिसने कभी क्रिटिसिज्म नहीं झेला, वो एक AC कमरे में बैठ के उसके पास मशीनरी है किसी को ब्रांड बनाने का या ब्रांड नहीं बनाने का, वो डिसाइड करता है कि मुझे ना उन 2 लोगों में ये लड़का ज़्यादा पसंद है, तो मैं आज इसको ब्रांड बनाता हूँ, अपनी पूरी मशीनरी इस पे लगाता हूँ, दूसरे पे नहीं. तो बाकी वो जो 14 खिलाड़ी हैं उनका क्या आप इस तरीके से, और फिर आप कहते हो कि आप स्टेक होल्डर ऑफ इंडियन क्रिकेट. यू आर नॉट अ स्टेक होल्डर ऑफ इंडियन क्रिकेट बाय एनी सेंस ऑफ by any means. You are only a businessman who are looking to make money out of Indian cricket. You're talking about the BCCI or the broadcaster here? The broadcaster. BCCI has been very, very fair. I'm talking about the broadcaster. And I've been very critical about it. I've been very vocal about it.
Broadcaster can never be a PR machinery. A broadcaster needs to be fair to everyone sitting in that dressing room. Everyone. क्योंकि कोई कम मेहनत करके इंडिया नहीं खेल सकता. सब बहुत मेहनत करते हैं. सबके पास सबको राइट देना चाहिए, सबको इक्वली वैल्यू करना चाहिए, सिर्फ एक या दो इंडिविजुअल्स को नहीं. शायद कोई बाहर आके नहीं बोल पाएगा. हमारे यहाँ आजकल क्या होने लग गया है, आप ये आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ फ्लैग फॉर दिस, कि लोग माइक पकड़ के कुछ बोलते हैं, माइक नीचे रख के कुछ और बोलते हैं. आज सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आज आप किसी को नहीं भी लाइक करते, लेकिन आपको उसके बारे में इसलिए सोशल मीडिया पे बोलना पड़ता है क्योंकि आपको फॉलोअर्स चाहिए. सोशल मीडिया डिसाइड करती है, आपके फॉलोअर्स डिसाइड करते हैं कि आपको कितना क्रेडिट मिलना चाहिए, कितना क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए. दिस इज़ नॉट राइट. दिस इज़ नॉट हाउ यू विल गो ऑन टू विन द वर्ल्ड कप्स. दिस विल नॉट हैपन. जब तक हम 15 या फिर वो जितने खिलाड़ी उस ड्रेसिंग रूम में हैं, सबको एक लेवल पे, एक इक्वल लेवल पे नहीं देखेंगे, तब तक हम जितना मर्जी बात कर लें, जितना मर्जी कहते हैं इंडिया 12 साल से वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीता, आईसीसी ट्रॉफीज़ क्यों नहीं जीती, ये जवाब सिर्फ उन खिलाड़ियों ने नहीं देना. ये जवाब, इस सवाल का जवाब मीडिया से लेके, ब्रॉडकास्टर से लेके, सोशल मीडिया से लेके, मेरे जैसे एक्सपर्ट्स से लेके, नॉर्मल पब्लिक से लेके, सबको देना है कि क्या हम इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड नेशन है या टीम ऑब्सेस्ड नेशन है. जब हम टीम ऑब्सेस्ड नेशन हो जाएंगे ना, तब इंडिया आईसीसी ट्रॉफी जीतेगा और वर्ल्ड कप जीतेगा, और बहुत जल्दी जीतेगा. लेकिन ए माइंडसेट शिफ्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट यू थिंक दिस वर्ल्ड कप थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ था माइंडसेट? आई डोंट थिंक सो. It was probably, if anything, it was worse. It was worse? Yep, absolutely. And you know it, I know it. I think this is the reality. So How? No measures taken since your time when that World Cup happened, because even No, then, during my time, I think it was much different earlier, because there was not a lot of social media in 2011. Not a lot of social media, and more importantly, I thought at that time the broadcaster was not so self-obsessed or so individual. but you did say that जैसे UV को नहीं मिला the credit which He should have got. And you know it. आप मुझे बताओ, आप एक खिलाड़ी जो 2011 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट होता है, कितने लोग बात करते हैं, आप बताइए कितने लोग. It's just a normal debate we are doing. क्यों? Probably because he doesn't have a good PR agency. Probably he's not spoken about. तभी ये जो underrated word है ना, it is a very unfair word. ये underrated कुछ भी word नहीं है. It is only undershown. अगर आप किसी चीज़ को दिखाओगे नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा. अगर आप एक चीज़ बार बार दिखाते रहोगे तो लोग उसी के बारे में, वो ब्रांड बन जाएगा. आज अगर मेरे पास एक मशीनरी हो, अगर मेरे को 2 लोगों को चूज़ करना, अगर मैं एक को 3 घंटे में 2 घंटे 50 मिनट दिखाता हूँ और दूसरे को 10 मिनट दिखाता हूँ, तो 2 घंटे 50 मिनट वाला व्यक्ति ब्रांड बन जाएगा. तो ये मत बोलिए कि मेरे को नंबर्स नहीं मिलते, मेरे को दूसरे बंदे से नंबर नहीं मिलते, या दूसरा बंदा ब्रांड नहीं है. आपने दूसरे को ब्रांड बनाने की कोशिश ही नहीं करी. आपने दूसरे को कभी वैल्यू ही नहीं किया. जब तक आप दूसरे को वैल्यू नहीं करेंगे, तब तक वो अपने आप को कैसे वैल्यू करेगा, तब तक ये देश उसको वैल्यू कैसे करेगा. इस वर्ल्ड कप में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, एंड आई एम वेरी प्लीज्ड अबाउट इट, कि कम से कम अब हम एक बैटिंग ऑब्सेस्ड नेशन से बॉलिंग ऑब्सेस्ड नेशन बन गए. मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इन सबको अब एप्रिसिएशन मिलनी, या फिर इनके हार्डवर्क के जो ये डिजर्व करते हैं क्रेडिट, वो मिलना शुरू है. Zaheer Khan didn't get the credit he got. Yeah. Tell me how many people remember this, The Dishant, World Cup, that 5 overs, Yes. 4 maidens, Yeah, brilliant. 4 runs or 1 run for 1 wicket, 5 overs, 4 maidens in a World Cup final at 2 o'clock in the afternoon under extreme pressure. Who knows about it? क्योंकि and you know, I come from a generation which used to envy Pakistan silently कि यार उनके इतने fast bowlers हो सकते हैं, छोटा सा मुल्क है, why can't we produce? You know, I belong to that generation which is, and I thought कि ठीक है, by the time I have kids, by then तो हो जाएगा, like, you know, but it didn't for decades together. We didn't have a bowling lineup for which it was considered aggressive and you know, a wicket taking bowling lineup. We always lacked that. It was this time that we saw teeth, really. That's why I said that one good thing that has happened in this World Cup is that we've started talking about our bowlers. And it was high time. It was high time because अगर ऐसे ही चलता रहता तो शायद आगे आने वाले समय में कोई बॉलर बनना ही ना चाहता. क्योंकि अगर आप सिर्फ बैट्समैन्स की ही बात करोगे, अगर आप सिर्फ बैट्समैन से ही ऑब्सेस्ड होगे और उन्हीं को दिखाते रहोगे, तो फिर कौन बॉलर बनना चाहेगा. एक वैसे ही इतना क्रिकेट जो है, वनडे क्रिकेट है, इतना बैट्समैन फ्रेंडली या बैट्समैन डोमिनेटेड हो चुका है, तो अगर आप बॉलर्स की बात भी नहीं करोगे तो
कोई पेरेंट अपने बच्चे को बॉलर नहीं बनाना चाहेगा. Yeah. पहले आप जो मेरे टाइम पे कहते थे कि बॉलर्स को ना वो एंडोर्समेंट्स नहीं मिलती, बॉलर्स ना वो ब्रांड नहीं बन पाते, बॉलर्स ना वो हमारे को नंबर्स नहीं दिला पाते. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपने रूल्स चेंज करे, सब कुछ बैट्समैन डोमिनेटेड कर दिया. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अगर आप आईपीएल की भी बात करें, आईपीएल में सबसे ज़्यादा पैसे किसको मिलते हैं? बैट्समैन को मिलते हैं. 2011 में मुझे मिले. उसके बाद अभी भी अगर आप देखेंगे जो हाईएस्ट प्रॉब्ली पेड होगा वो बैट्समैन ही होगा. उसके बाद बॉलर्स इस तरीके से ड्रिफ्ट होते चले गए. और फिर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, हम पाकिस्तान की तरह फास्ट बॉलर्स या बाकी देशों की तरह फास्ट बॉलर्स क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते? मेरा मानना है कि अभी भारत के जो 3 तेज़ गेंदबाज हैं वो वर्ल्ड में, आई थिंक दे आर द बेस्ट फास्ट बॉलिंग यूनिट in the world, not only in India. So I'm really glad that now we can actually talk about our fast bowlers, and I hope it is not only about numbers, it is about looking at the next generation as well. So that the parents can actually tell their kids to become bowlers. And these 3 fast bowlers in this World Cup has made sure that going forward, I think we still continue with that legacy of creating some really good fast What does bowlers. it feel like being part of KKR again? See, it was a very, very emotional decision. It was a decision which was a tough decision, because with Lucknow, obviously had some really good memories for last 2 years, but then going back to KKR was something which was very emotional. I remember 2011 till 2017, there were a lot of emotions that were involved in to create a franchise, to create a legacy. Was able to win twice with the help of everyone. But then going back there, and the way they've shown love when I was there for 7 years, was fantastic, and hopefully we can deliver. Because did Shah Rukh reach out to you before this? Yes, he did. He did. Yes, he did. And what do you say? Wapas aaja in that Delhi boy way. Yes. And whenever we talk in a Delhi way only. We don't talk in a Mumbai way or any other way. It's like two Delhiites talking. And he's been fabulous. He's been someone, I've said it openly as well, probably one of the best owners I've worked with. And you won't believe this. 7 साल जब मैंने captaincy करी है, he had not spoken to me for 7 minutes about cricket. 7 साल में 7 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 7 मिनट भी मेरी और शाहरुख भाई की बात नहीं हुई for 7 minutes. I remember the first time we met, he told me that this is your team, make it or break it. अगर कोई मुझे एक्टिंग के बारे में समझाएगा तो मुझे कैसा लगेगा, तो मुझे पता है अगर तुझे मैं क्रिकेट के बारे में बताऊंगा तो तुझे कैसा लगेगा. So our conversations should be only about what's happening in life. In 2014, and I realized that what he said in 2011, he actually lived up to it. 2014 in Abu Dhabi, we started this IPL where I got 3 ducks in a row. 4th game I got a 1. और हम पहले 5 मैच में से 4 मैच हारे और मेरे 4 मैच में 1 रन बना था. तो we were coming back, we were staying at Ritz-Carlton, Abu Dhabi. So he was standing in the lobby, we lost that game. So he took me on the side and said, I want to sit with you. What's happening? Is everything fine? No cricket, nothing. I said, I'm thinking of dropping myself. He said, what? I said, I'm thinking of dropping myself. I don't think so. I deserve to be part of the playing 11. 3-0, 1 run, 4 मैच में कहाँ से मेरी जगह बनती है? I don't think so. I think, and I've always been like that, I think a leader should be a selfless leader, and a leader should be someone who should put his team ahead of him, which is probably the first quality of a leader. Should always be there. He said, till you are there, and you are there till you want to be there, you're not dropping yourself. You will play. That you have to promise me that. He said, but I don't think so. I should be part of the playing 11. I said, you have to promise me there. Till you want to be here, you will be here. And till you're here, you will play every game. You have to promise. I said, okay, I promise. I came back. I got 3 or 4 half centuries in a row. We won in 2014. That was my only cricket conversation with him in 7 years of my captaincy with KKR. So imagine the amount of freedom he had given me. And वो एक trust भी build हो जाता है, because he knows that how passionate I am, that he knows what kind of a character I am. He knows that I will always keep a team ahead of myself. It will never be about me. It will always be about the team. So when we had built that relationship for 7 years, it was fabulous. Every duck that you score, there's a scar, no? In the past 20 minutes that we've spoken, नहीं, मैं आपको बताता हूँ. Ducks ज़्यादा और centuries कम. सबसे बड़ा स्कार क्या था? हाँ. जब मैंने 3 डक्स बनाई, ये बहुत फनी इंसिडेंट है. तो 3 डक्स बनाए, उसके बाद हमारा मैच था, आई थिंक चेन्नई से या किसी से, तो आशीष नेहरा वाज आल्सो देयर इन द सेम होटल. तो चल नीचे ना डिनर करते हैं. सो 4 or 5 of us जो दिल्ली के लड़के, वी वर हैविंग अ डिनर इन अ रेस्टोरेंट होटल में.
रिट्स कार्टन में, तो ऐसे ही बैठे हुए थे, तो ही ऑर्डर डक। तो ऐसे सेड यार, सबने, किसी ने कुछ ऑर्डर किया, किसी ने कुछ ऑर्डर किया, तो सेड डक, उसने डक ऑर्डर करी, तो मुझे कहता है कि खा ले। मैंने कहा आई डोंट ईट डक। कहता है यहाँ खा ले, नहीं तो कल बन सकती है। I so mean. That's so Delhi. कहता है यहाँ खा ले, नहीं तो कल एक और बन सकती है। तो मैंने कहा यार बड़ी टाइट सिचुएशन है, मैं खाता हूँ नहीं डक एंड ऑल दैट। मैंने कहा चलो यार टेस्ट कर लेता हूँ। जो टेस्ट करी तो अगले दिन एक ही रन बना, कम से कम डक नहीं बनी। तो देन ही मैसेज मी, इसे देखो मैंने कहा था तू टेस्ट कर ले, कम से कम डक तो नहीं बनेगी। So, But tell me this cricketers thing, can be very mean at times. ये जो Delhi boys going खाना अलग खाना, बॉम्बे टीम, ये ना, पर रांची में होता था, यहाँ बिल्कुल पे भी नहीं नहीं, है। बिल्कुल भी नहीं होता? है, नथिंग। मतलब इंडियन टीम में तो आई रिमेंबर दैट वी यूज्ड टू, मैं, इरफान, मुनाफ, जहीर, ऑल ऑफ अस यूज्ड टू ईट टुगेदर। मतलब कभी कोई नथिंग मुझे मतलब ये देखो बॉम्बे और दिल्ली का अलग है ना, बैंगलोर का अलग होता था। टेस्ट अलग हो सकते हैं, हाँ, खाने के टेस्ट, खाने ऑर्डर अलग कर सकते हो। अगर आप 5 लोग बैठे, किसी को कुछ और अच्छा लगता है, किसी को कुछ और, बट ऐसा कभी नहीं है कि दिल्ली इट्स गोइंग टुगेदर या मुंबई। हाँ। is और going- सबके अलग अलग नाम होते हैं ड्रेसिंग रूम में। यू हैव अ नेम टू, लाइक जी, हाँ, यूवी, भज्जी, मतलब वही निक नेम्स। कौन रखता है ये नाम? पहले से ही आते हैं? हाँ, with the पहले से ही name? आते हैं। आई थिंक मोर और लेस आप जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तब से आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो बिकॉज आप पूरा नाम कभी लेते ही नहीं है, तो इट जस्ट गेट्स यूज्ड टू इट एंड देन वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से इट carries on and it stays with you for the rest of your life. But is that like जैसे जो senior है, like obviously once you are senior, will the juniors also call you by the nickname या फिर वो जी करके बोलते हैं? anything. G in the sense like Gautam G. No, that one. nothing, not at all. I think that also depends on the senior, that how comfortable They are, okay. Yeah. But there's a level of respect, Yeah, I they make guess. the junior feel, but ये हमारे culture में भी है. हाँ, It's not like a yeah. Australian or English culture. Very- कि very किसी को- casual. जैसे अब if I have to call Sachin, I'll say Sachin Paji or something like Yes. that, or something, or Lakshman bhai or Rahul bhai or something, Dada, Anil bhai. It's just in our culture. मतलब Yeah. आप, मैं आपको भी बोलूँगा तो मैं आपको जी लगा के ही बोलूँगा. That's just how we are brought up. Okay. I'm going to use this opportunity, IPL, to talk about what happened earlier in the year. Naveen ul Haq controversy. Please tell me what happened, because we are talking about player equations, chemistry and all that. You got involved. वो visuals सबने देखे थे. And it was a hot topic. But can you just clear the air कि हुआ क्या था? What happened? And eventually I'm sure that things got okay. But See, I've said it. Where did I say? I said it once somewhere, where every individual, irrespective of where he comes from, what level of a cricketer or a sportsman he is, how much social media followers he has the right to play for his team, to play for his jersey, and more importantly, to play for his pride. And that is something which everyone has every right to. Or no one is out there to take abuses. As simple as it can get. If someone has the right to give an abuse, he should have the courage to take it back as well. So for me, I think once the game was done and dusted, you're allowed to be as aggressive as you want to be on the cricket field when the game is on. Absolutely spot on. I'm absolutely for it. Sledging, banter, everything. Robots are not playing, humans are playing, they've got emotions. Everything on the cricket field, till you don't cross that line, you're absolutely fine to be as aggressive, as emotional, as much emotions you want to show. You have all the right to do it. But once the game is over, once you've shook hands, then you have no right to get into a heated argument or a confrontation with. No way. That is being getting personal. That is something which is not acceptable. And that is exactly which was not done. And that is exactly that has happened on that particular day. Because on the cricket field, you want to win for your team, you've got all the right to win for your team. But once the game is over, once you won or once you've lost the game, if you then get into an argument or if you get into a sledging or something like that, then it means you're getting personal. And once you get personal, then you get personal. what was the need for you to jump in? No, This was between Virat Kholi honestly, and Naveen ul Haq. No, it was not about me involving myself. It was about, as I just mentioned it to you, once the game was over, and I had, till then it was fine, but once the game is over, then it was nothing between. I have all the right to defend my players. As a mentor, no one can come and walk over my players, and I've got a very
different belief, and I have lived with that belief, and I will continue to live with that belief that I will never leave anyone alone. That is how I've lived my life, and I will continue to live that. Till the time game was on, I had no right to interfere. But once the game was over, if someone still gets into a heated argument with my players, I've got all the right to defend them. Do you And feel- I will, Yeah. in future also, if something like that happens, I will defend that. You just think that just this brutal star power of Virat Kohli was maybe too much for Naveen Ulhaq to handle, and he needed your support, your assistant. He needed to know that the mentor is there to back me up. He needed that No, thing. it's not That's only why about you Naveen came. Ulhaq. I would have backed anyone, and I would have backed everyone in that dressing room. That's my job. That's how I am. That's how my mindset is. If I'm a mentor or a coach of a particular franchise, and once the game is done, I have all the right to defend my players. And why should I not defend my players? Why should I not? Just because someone has a broadcaster working for him left, right, and center, someone has got more social media followers, doesn't have any right to walk over someone once the game is over. And if I could not stand next to my players, I have no right to be sitting in that dressing room. And imagine if the same thing happens to your staff. Would you not stand by your staff? Tell me. Absolutely. Would you not? You Absolutely, will. yeah. Because ultimately, they're also looking up to you. And that is exactly where I thought that it was very important for us. As a franchise, it was important for us to have our own identity. It was important for us to make sure we tell all the other franchise that we are there and we mean business. That no one can come to Lucknow and do whatever he wants to once the game is over. And we just kept looking at it and kept making those things happen. We cannot do that. When I started this answer, I said it very clearly that everyone has a right to play for his jersey, to play for the teammates, and more importantly, to play for his respect. If someone cannot defend his respect, then it means that he's got nothing left in him. You wear your emotions on your sleeve. This is your strength, as well as some may say your weakness. I think we consider it. It's very refreshing that your aggression and your passion shows on the field. After that incident with Naveen Ulhaq and Virat Kohli, uske baad mahol kaise hota hai? Your relationship is back on track, or is there still sort of unsaid thing? Are you No, still my relationship with everyone is exactly the same how it was. I have never taken any fight off the field, and I will never take it off the field as well. And this is also social media created, that I have certain issues with certain players. Not at all. Why should I have? And I'm not a cricketer anymore. I don't play active cricket. I've got nothing, honestly, to look forward to from that point of view, where I'm competing against anyone or everyone who's playing international or, for that matter, franchise cricket. What is it? I have all the right to be passionate about winning a game of cricket with a franchise, whichever franchise I'm involved with. Why? You don't want to win every time? I want to win every time. You want to win every time. Everyone has the right to win every time. And in that case, if this is my way of being passionate and try to win and be aggressive, that's my way. People like it, not like it, that's their problem, not mine. Right. So I have no issues. Yeah, if someone wants to take it personal, they have all the right to take it. But I don't take any issues or any fights personally. So you're saying most of this is basically Yes, media. because ये चीज़ें बिकती है ना. क्योंकि अच्छा, आज मुझे ये बताओ कि कल इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है, why is it always कि आप मेरी और शाहिद अफरीदी की लड़ाई दिखाते हो? Why? There are so many other fights that has happened. Show something positive. Show something that where India has gone on to win 2007 T20 World Cup. Show when India has won the Asia Cup against Pakistan. You know why also? It's something that I want to fight against Shahid Afridi, and Gautam has taken on cudgels on my behalf. Not only that, at least for me, it is that. No, I think the Shahid Afridi thing is because of that one clip. It was, I think, the Test series where he was standing there while you were running. He was that standing. Was a one-day series. One-day series, sorry. Yeah, but मेरा जब where you nudged him and you went up to him. मेरा point ये है कि ऐसा तो नहीं है कि पूरी इंडियन क्रिकेट में सिर्फ वही लड़ाई हुई है. नहीं. उसके बाद भी बड़ी चीज़ें हुई हैं. क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, सब कुछ नंबर की गेम है ना, कि आपको सोशल मीडिया पे कितने ट्रैक्शन मिलता है, आपको ब्रॉडकास्ट में टेलीविज़न पे कितने आपको टीआरपी की रेटिंग मिलती है. सब कुछ वो नहीं है. अगर आप एक ही चीज़ दिखाते रहोगे तो वो अल्टीमेटली नेगेटिव ही हो जाती है. पॉजिटिव चीज़ें भी है दिखाने के लिए ना. इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हराए हैं, लेकिन जब भी इंडिया पाकिस्तान की बात होगी आप वही दिखाओगे. मेरे से ज़्यादा लड़ाइयाँ बाकी खिलाड़ियों की भी. It's like Shahrukh is in that Wankhede.
Yes. जो उसके साथ हुआ था शाहरुख के साथ Yes. वानखेड़े में हुआ था, एवरी टाइम शाहरुख इज देयर इन द स्टेडियम, वो तो बेचारा आई थिंक स्टेडियम भी नहीं जाता उसकी वजह से, बताओ। बिकॉज दे से दैट अब ही इज गोइंग टू गेट डाउन एंड दिस इज व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट. See, this is where the problem is. Can't we move on from that? If you don't want to move on, I'm absolutely fine with it because I have moved on. I had moved on that particular day itself. अगर लोगों को लगता है I hadn't moved on, I have moved on long time back. People don't want to move on, that's their problem. यार, अब how can I control what a broadcaster or a television or an electronic media or a social media wants to show? This is not in my hand. What is in my hand is that I have all the right to win a game of cricket and be passionate about it, and more importantly to be absolutely honest and accountable to the franchise or a team which I'm representing. अब वो लेजेंड तो बन गया है ना, दैट देयर इज अ राइवलरी एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इवन इन दैट क्राउड में व्हिच यू से दैट डिडंट हैपन वेयर दे केम एंड से विराट व्हेन यू Absolutely no, that's not true. बिल्कुल गलत है ये. अगेन दिस इज अगेन अ वेरी सोशल मीडिया क्रिएटेड काइंड ऑफ अ थिंग. वहाँ पर बहुत लोग थे. वो तो ये भी बताया गया कि वो मैच ही नहीं था इंडिया का, तो वो मैच ही नहीं था जिस मैच में ये चीज़ हुई है. अगर इंडिया का मैच होता आई कैन अंडरस्टैंड, वो तो मैच ही किसी और का था. उसमें तो ये भी दिखाया गया कि मैं दूसरी शर्ट पहनी हुई थी, मैंने कुछ और पहना हुआ था इस टाइम पे. This is talking about when he was अभी heckled, when he was when he was heckled. walking अभी away. एशिया कप. Yeah, I'm just putting context वो for our viewers. पाकिस्तान का हाँ. वो पाकिस्तान का Yeah. मैच था. आई डोंट इवन रिमेंबर, शायद वो पाकिस्तान का ही मैच था, पाकिस्तान श्रीलंका, आई डोंट नो किसका मैच था वो. बट आप जब कमेंट्री करके वापस जाते हैं तो आप क्राउड के वहाँ से जाते हैं, डिपेंड्स जी. ऑन द स्टेडियम एज वेल. Yes. अब अगर कुछ लोग वहाँ पर खड़े होके Heckle कर रहे हैं. हैकल भी नहीं, अगर आप हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बोलेंगे जो मैं नहीं बोल सकता पॉडकास्ट पे इस तरीके की, तो आप क्या आप करते हैं कि आप सर नीचे करके चले जाएं. एक बार ही उनको बोला कि आप मत करिए. अगर सिक्योरिटी ने वहाँ पर बोला कि आप ये चीज़ें मत करिए, ऑब्वियसली श्रीलंकन सिक्योरिटी थी वहाँ पर, उन्होंने मना किया. अगर कोई नहीं सुनने को राजी, एंड इन द हीट ऑफ द मोमेंट आई एब्सोल्युटली एक्सेप्ट दैट आई मेड अ रॉन्ग जेस्चर, आई शुड नॉट हैव मेड अ रॉन्ग जेस्चर, आई शुड नॉट हैव मेड दैट जेस्चर. बट समटाइम्स व्हेन यू लिसन टू दीस काइंड ऑफ थिंग्स यू रिएक्ट, Yes. एंड एवरीवन रिएक्ट्स डिफरेंटली. मतलब अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करें कि जैसे आप रिएक्ट करोगे वैसे ही मैं रिएक्ट करूँ, वैसे ही मैम रिएक्ट करेंगे, एवरीवन हैज़ डिफरेंट माइंडसेट्स. तो एक टाइम अगर समझा दिया गया था कि यार ऐसी चीज़ें मत बोलो, ऐसे नारे मत लगाओ, ऐसे स्लोगन्स मत करो, उसके बावजूद इफ समवन डजंट वांट टू लिसन देन यू रिएक्ट, व्हिच आई एक्सेप्ट. आई एम एक्सेप्टिंग दैट आई शुड नॉट हैव मेड दैट जेस्चर, बट इट इज़ उसमें भी कितने जर्नलिस्ट घुस गए क्योंकि आपको सिर्फ अपनी टीआरपी चाहिए थी. आपने ना किसी से पूछा एग्जैक्टली क्या हुआ, आपने ना कभी क्लैरिफाई किया, ना आपने बोला कि आपने तो ये भी बता दिया कि वो इंडिया का मैच था, इंडिया का मैच भी नहीं था. उसके बावजूद आपने सिर्फ रिएक्शन दिखाया. रिएक्शन आपने इसलिए दिखाया क्योंकि एक चीज़ जो आईपीएल में हुई थी उसको आप मूव ऑन उससे नहीं करना चाहते थे, आप उसको कंटिन्यू करना चाहते. तो आपने बोल दिया कि जी एक इंडिविजुअल के नाम के नारे लग रहे थे इसलिए ऐसा रिएक्ट किया. पीपल हैव ऑल द राइट, आप जितने मर्जी नारे लगाई, मेरे को उससे क्या प्रॉब्लम है. जैसे मैंने आपको बोला कि आई डोंट टेक एनी फाइट्स personally, but yeah, when it comes to the nation, when it comes to someone abusing a nation, my nation, I have all the right to react in a way which I want to, probably in a more sensible way. But जो चीज़ें लिखी गई और जो बोली गई, which was absolutely wrong, which was absolutely not right. That's why I did not even bother. Yes, I gave, वहाँ पर मैंने मीडिया को बुला के बोल दिया था. उसके बाद I did not even react because आप कितने लोगों का मुंह बंद कराओगे, कितना सोशल मीडिया पे क्लैरिफाई करोगे, क्योंकि it is never ending. And my conscience knows it, my heart knows it. If I can live with peace, if I can sleep in peace, I don't have any issues ki what people are talking about it. It's like that there's a whole lot of controversy which came after the Prime Minister went into the dressing room and spoke with the Indian team after they lost the finals. So there's a whole bunch of people saying that that is a sacrosanct area just for players and the Prime Minister shouldn't have gone. While Ravi Shastri and the others said that it's okay, there's nothing wrong with that and it's good that he was there. So these are 2 points of view. Where do you stand in that? मैम, एक तो मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ. मैं ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया देखता नहीं हूँ, और बट ये जो शब्द का इस्तेमाल किया गया था ना, पनौती, इट इज़ प्रॉब्ली द वर्स्ट वर्ड दैट कुड हैव बीन यूज्ड अगेंस्ट एनीवन, पर्टिकुलरली अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस नेशन. और रीज़न मैं बताता हूँ कि जिन्होंने भी ये इस्तेमाल किया और जिन्होंने ये, क्योंकि ये शब्द मुझे याद है कि एक टाइम पे आईपीएल के टाइम पे जब ये प्रेडिक्शंस मांगते थे तो ये कई इंडिविजुअल्स के, कई प्लेयर्स, एक्सपर्ट्स के लिए भी यूज़ किया जाता था. पहली बात तो ये कि इतना ख़राब शब्द है कि आप किसी के भी खिलाफ ये शब्द इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते. जब भगवान ने सबको बनाया तो किसी एक मकसद से बनाया, और आप किसी को पनौती क्यों कहेंगे, क्यों? दिस इज़ प्रॉब्ली द लोएस्ट थिंग दैट कैन बी टॉक्ड अबाउट एनीवन, एंड
particularly the Prime Minister, and Prime Minister has all the right in the world to be in that dressing room. Absolutely all the right. इसमें कोई खराबी नहीं है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने ही ये किया, इससे पहले भी ऐसे तो जैसे मैंने आपको बताया था 2011 सेमीफाइनल में डॉक्टर मनमोहन सिंह भी वहाँ पर थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर थे. अगर वो मैच हारे होते और डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर हमारे से आके मिलते तो उसमें क्या खराबी होती. प्राइम मिनिस्टर अगर वहाँ पर आके प्लेयर्स से मिल के, एंड आई नो इट फॉर द फैक्ट, क्योंकि हम भी बहुत T20 वर्ल्ड कप्स में इंपॉर्टेंट मैचेस हारे हैं, कि किस तरीके का मूड होता है, किस तरीके के प्लेयर्स, व्हाट प्लेयर्स आर फीलिंग. मतलब नो वन एल्स कैन इवन थॉट अबाउट इट. नो पॉलिटिशियन, इफ आई एम सिटिंग हियर एज अ पॉलिटिशियन, आई कैन टेल यू कि नो पॉलिटिशियन, नो एक्टर, नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन फील व्हाट दोज प्लेयर्स आर फीलिंग एट दैट मोमेंट. कि शायद अगले 4 साल बाद जो 50 ओवर वर्ल्ड कप आएगा, पता नहीं इनमें से कितने लोग उस वर्ल्ड कप का पार्ट हों. एक ड्रीम, when you see your dream getting vanished, finished, shattered, imagine what a mindset would be. और अगर देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर हैं, चाहे वो 2 मिनट के लिए या चाहे उनके 2 शब्द अगर उन प्लेयर्स को बेटर फील कराते हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. उससे बेहतर कुछ नहीं है. सो आई थिंक कि हमारे देश में अब नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है. हर चीज़ को पोलिटिसाइज करो, हर चीज़ की पॉलिटिकल माइलेज ले लो. हर चीज़ की, मतलब वर्ल्ड कप हो, कोई इवेंट हो, कुछ भी हो रहा हो, उसकी कैसे पॉलिटिकल माइलेज मिल सकती है, कैसे नैरेटिव क्रिएट किया जा सकता है, सोशल मीडिया पे कैसे पैसा खर्च करके किसी के अगेंस्ट किसी को ट्रोल कराया जा सकता है. सच्चाई ये कि प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल वहाँ पर रहना ज़रूरी था, होना भी चाहिए था, और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक किया. शायद मैं कहता हूँ कि अगर मैं BCCI प्रेसिडेंट होता, मैं भी वही करता, मैं भी जाके प्लेयर्स से बात करता. अगर आप BCCI प्रेसिडेंट होते, आपके पास भी पूरा राइट था कि प्लेयर से जाके बात करने. वहाँ पर 2 मिनट अगर किसी के कंधे पे हाथ रख के किसी को अगर आप 2 मिनट की वो खुशी दे सकते हैं या कुछ उसका दिमाग रिलैक्स कर सकते हैं, वो थॉट से दूर लेके जा सकते हैं, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. आप और किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं कर सकते. शायद वो रात मुझे पूरा विश्वास है उन 15 या उन 20 लोगों की कितनी मुश्किल से गुजरी होगी जो वो फाइनल हारे होंगे. तो शायद वो 2 मिनट अगर कोई अच्छी चीज़ बोली जाए तो इसमें कोई खराबी नहीं. इसको When you went back to the room that night, did you also have that sinking feeling? Because you see every one of us. What did you feel that day? See, because I felt that in my own career. That's why I can say it. I can absolutely with all my senses can say this कि कोई politician वो feeling नहीं सोच सकता, कभी भी नहीं. कोई एक्टर नहीं सोच सकता जो एक स्पोर्ट्समैन. तभी मैंने जब ये इंटरव्यू स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था एक स्पोर्ट्समैन का माइंडसेट बाकी सबके माइंडसेट से बहुत डिफरेंट होता है. क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, पॉलिटिक्स में आपके करियर 60, 65, 70, 80 साल तक चल सकते हैं. स्पोर्ट्समैन का करियर 35 या 36 साल तक ही है. अब पता नहीं 4 साल बाद ये लोग होंगे नहीं होंगे, कितने प्लेयर होंगे नहीं होंगे. तो मुझे भी वो हॉलो फीलिंग थी, मुझे भी वो सिंकिंग फीलिंग, और वो सिंकिंग फीलिंग ना बहुत ख़राब फीलिंग है कि आपके पास इतना बड़ा मौका था, आप घर पे रेप्लिकेट कर सकते थे 2011 का वर्ल्ड कप. आप भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप क्रिकेट शुरू करते हैं तो आप कभी ये नहीं सोचते कि मैं 10,000 रन बनाऊंगा, 20,000 रन बनाऊंगा. आप ये सोचते हैं कि मैं भी वर्ल्ड कप जिताऊंगा अपने देश को, मेरी भी एक बारी जर्सी पे 3रा या 4था स्टार लगेगा, उसके लिए आप क्रिकेट खेलते हैं. तो जब वो ड्रीम ख़त्म होती हुई दिखती है ना, और वो सिर्फ वो ड्रीम उस ड्रेसिंग रूम में नहीं, जब वो मैच हार रही होंगे टीम, तो आप इमेजिन करिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाकी जो 11 खिलाड़ी उस फील्ड पे होंगे, हर बाउंड्री पे, हर रन पे, वो जो फीलिंग होगी ना, वो सिर्फ एक स्पोर्ट्समैन ही उसको डिस्क्राइब कर सकता है, कोई और व्यक्ति नहीं डिस्क्राइब कर सकता. जब वो लास्ट बाउंड्री या जो लास्ट 2 रन मैक्सवेल ने बनाए थे, वो जो फीलिंग होगी, वो फीलिंग शायद पूरी ज़िंदगी उनके पास रहेगी जब तक वो विश्व कप नहीं जीतते. आप 20,000 रन बना लीजिए, आप 100 शतक बना लीजिए, लेकिन वो फीलिंग है ना. तो इसलिए मेरा मानना है कि जिस भी तरीके का जो भी सपोर्ट मिले उस वक्त पे, आई थिंक इट्स गोल्ड. इट्स नॉट ओनली गोल्ड, इट्स डायमंड. तो प्राइम मिनिस्टर हैड ऑल द राइट टू बी देयर सपोर्टिंग हिज प्लेयर्स, बिकॉज अल्टीमेटली हैं तो हमारे देश के ही खिलाड़ी, और प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं. तो उनकी तो जिम्मेदारी 140 करोड़ भारतीयों की है. तो वो भी 15 या 20, तो इसको पोलिटिसाइज करना, ऐसे शब्द देना सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए इज़ नॉट राइट. और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं यहाँ पर एज अ BJP MP बोल रहा हूँ. अगर यहाँ पर अगर मैं एज अ स्पोर्ट्समैन होता, या मैं अगर स्पोर्ट्समैन भी ना होता, एक नॉर्मल इंडिविजुअल होता, तब भी मैं कहता कि हर चीज़ को पोलिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ के लिए पॉलिटिकल माइलेज लेने की ज़रूरत नहीं है. In that way, it's good that T20 is happening after the 2024 election. Yeah, that's what I wanted to ask you. You're saying in सबकी they're getting older. You know, a sportsman की 30 or 36. तो ये जो T20 World Cup which is going to happen in the Caribbean in the US, ये रोहित शर्मा, विराट कोहली, do you think they should play? See, all depends on the form.
ultimately Or about give way no to a way. new I team. think ultimately it's the form as well, and good thing is it's happening before the IPL. If they And keep you have said that Rohit Sharma and Virat should be there, 100%, and if that they are in good Rohit form, Sharma and should be the captain if and they're in not good form, Of the World Cup. of the World. if they are Yeah. in good form. Okay. See, for me, form is very, very important. Ultimately, for a T20 World Cup, you want to take players who are in really good form. Yeah. If Rohit Sharma and Virat Kohli are in very good form, they should absolutely be picked for the T20 World Cup. And who has the right mentality for a captaincy of T20 now? And Do you think Rohit yeah, has learnt from the World Cup? And I just adding to your thing, you have seen MS Dhoni's captaincy also. You've seen Rohit Sharma, Virat Kohli. After MS Dhoni 12 साल हो गए ड्राउट पे. Where do you मैंने think? आपको 12 साल के ड्राउट का रीजन बता दिया. But इनकी कैप्टनसी में जो मैम बोल रही है, कैप्टनसी में मैं बताता हूँ, आई थिंक रोहित हैज डन अ वेरी वेरी गुड जॉब. इट इज नॉट इजी टू विन 5 IPL ट्रॉफीज. It is not easy to win 5 IPL trophies. And the way India has dominated in this last 50 over World Cup. And I said that before the World Cup final as well. I remember I was commentating for the Star Sports and I said that irrespective of what the results happen, whatever the result is after the World Cup, India has played like a champion side. One bad game doesn't make Rohit Sharma or this team a bad team. 10 games and the way they've dominated. Yeah. देखो 10 मैच I can still understand कि अगर आप कहीं ना कहीं मुश्किल से जीत रहे हो, गेम्स हुई हैं, लेकिन द वे दे प्लेड. अगर आप ये मुझे कहने की कोशिश करो कि सिर्फ एक मैच हारने से ये टीम खराब हो गई, रोहित शर्मा खराब कप्तान हो गए, तो दिस इज़ नॉट फेयर. तो आई थिंक इफ रोहित शर्मा इज़ इन गुड फॉर्म, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द फॉर्म, then he should be leading in T20 World Cup. If he is not in good form, or whoever is not in good form should not be picked for the T20 World Cup. As simple as it can get. Captaincy is a responsibility. First you get yourself selected as a player, as a batsman or a bowler, and then you're made a captain. ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप कैप्टन बनाओ. कैप्टन वही होना चाहिए जिसकी परमानेंट पोजीशन तो हो प्लेइंग 11 में, और वो परमानेंट पोजीशन प्लेइंग 11 में आपके फॉर्म पे डिपेंड करेगी. तो अगर आप किसी भी खिलाड़ी का एज is not the criteria where he should be dropped or where he should be picked. Only your form should be the criteria. ये दो चीज़ें सिर्फ इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है, कितना वो खेलता है, कब वो रिटायर होता है और कब वो शुरू करता है. रिटायरमेंट भी एक इंडिविजुअल डिसीजन है. जब उसका मन करे रिटायर होने का तब वो रिटायरमेंट ले सकता है. कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता, ना उसको करना चाहिए कि अब आप रिटायर हो जाओ. ठीक है, सिलेक्टर्स हैव ऑल द राइट टू नॉट पिक देम, बट अल्टीमेटली यू कांट टेक अ बैट अवे फ्रॉम अ प्लेयर, नो, और अ बॉल अवे फ्रॉम अ snatch a ball away from a player. That's his right. So form is the topmost priority. Are you done with cricket? Yeah. चलें अब थोड़ा सा Go move ahead. करें. Go Okay, ahead. let's get talking about the other hat that you wear of a politician. 2019 you joined in. Now we are in 2023, 2024 general election coming up. Do you feel frustrated at times you haven't been able to, or do you feel that you have been able to serve a large number of people? How do you feel? You want me to be looking honest? back? Honest, yes. Absolutely honest? Absolutely. Frustrated at times. Yeah. And I would not lie. Frustrated from a point of view that I wanted to do a lot, because that's why I got into it. I thought that I can probably born and brought up in Delhi, lived all my life in Delhi, did all my education in Delhi, did my schooling, college. Delhi gave me everything possible. Whatever I could achieve in life is because of Delhi. Delhi gave me the platform. So I thought that I could serve the people of Delhi and especially my constituency, because I remember in 2019 when I was given the ticket to fight from East Delhi, that was my first time when I went to East Delhi. Because मेरी जो East Delhi का connection था वो कोटला तक ही था. फिरोशा कोटला के आगे I've never been. यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बहुत पहले गया था थोड़ा बहुत खेलने when I was a young kid. But my dad's office was in East Delhi for last 35-40 years. He started his business from East Delhi and it's still there. So I thought that I could do something, and there were a lot of challenges in East Delhi as well. But then when I look back today, yes, there has been a lot of frustrating moments, and I would not lie on it, because I thought that, and the frustrating moments are not because of the opposition, it's because of our own people as well. चाहे वो कुछ भी आप अच्छा करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं hindrances, कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश, which can get frustrating, because see, ultimately I'm not a hardcore politician. Neither do I want to become one. I don't want to become a hardcore politician where I'm thinking 24/7 about politics, कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे manipulate करना चाहिए. See, I'm a very black and white boy. I live my life in those two colors, and I thought that
कि yes, there has been times when it has been frustrating, but there has been time it has been very, very pleasing as well. Especially, You don't play by the rules of the game. Yeah, I'm going to come to the rewarding I part of don't. it. I Yeah. don't play by the rules of the game, and I've never done that. And which probably is my strength and my weakness as well. The reason is because if you go just by the rules of the game, things will not move. Things cannot move. I always feel that if you're doing something good for the people of Delhi, if you're not provided you're not doing it good for your own self, if you're doing it for the people, you have all the right to probably not play by the rules. Yeah, because you didn't. देखो अगर मेरा सेल्फ झट इंटरेस्ट से जाके you didn't buy a Lutyens, you didn't go into a Lutyens bungalow. मिला ही नहीं आपको. मेरे को तो मिला ही 3-3.5 साल बाद. हाँ. और मैंने मांगा भी ना, मैं रहता भी नहीं हूँ वहाँ. इमेजिन मैं रहता भी नहीं. और मैंने मतलब और मुझे ये भी Everybody was like, why doesn't he, like, that's the first thing that आप people ये do. बिलीव करो, मुझे ये भी नहीं पता वो कौन सी क्लास का बंगलो है. हाँ. 5 टाइप 5 है, 6 है. मेरे को बाद में पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है कि टाइप 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, पता नहीं और कहाँ तक होता है. आई हैव नो क्लू. तो वो तो बिकॉज इन्होंने मेरे को, जब मैं MP बना तो सबने मुझे बोला कि आपको बंगलो मिल गया. ऐसे नहीं, तो बाकी 6 के 6 MPs को तो मिल गया. तो ऐसे कहाँ मिला है, मुझे ये भी नहीं पता कहाँ मिला है. तो कहता आपको नहीं मिला. ऐसे नहीं मिला. तो 3.5 साल बाद किसी MLA का बंगलो खाली हुआ. केरला के वो MLA थे, उनका बंगलो खाली हुआ. तो कहते हैं ये आप ले लीजिए. मैंने कहा दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वहाँ पर मैं अपना ऑफिस बना लूँगा. वो भी लुटियंस, जब मेरे घर से लुटियंस स्टार्ट होता है वो पहला बंगलो है. तो वहाँ मैं रहता नहीं हूँ. तो मैं कोई इन मकसद के लिए नहीं आया. मुझे कोई बंगलो से प्यार नहीं है. मुझे कोई इस चीज़ से प्यार नहीं है कि मेरे लिए क्या. आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि डू आई प्ले बाय द रूल्स ऑफ द गेम, नो आई डोंट. बिकॉज इफ आई कैन हेल्प द पीपल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूँ. अब कोविड के टाइम जब हमने फैबी फ्लू बांटी लोगों को, तो मैं वो केस आज भी लड़ रहा हूँ. लेकिन अगर आप एक किसी पॉलिटिशियन से पूछेंगे तो वो ज़रूर आपको ये बोलेगा कि आपको वो नहीं करना चाहिए था. बट मुझे लगता था उस वक्त पे अगर किसी की ज़िंदगी बच सकती है तो वो बचानी ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कि क्या रूल्स कहते हैं क्या नहीं कहते. बहुत चीज़ें बोली भी गई कि हम होर्डर, हम ब्लैक मार्केटर. सच्चाई ये है कि होर्डर वो होता है जो बल्क में चीज़ें खरीदे, अपने घर में होर्ड करे और उसको ब्लैक में बेचे. हम नॉर्मल केमिस्ट से ख़रीदते थे. अपने ऑफिस में हमने MP ऑफिस में हमने मेडिकल कैंप लगाया. वहाँ डॉक्टर था, उसकी सुपरविजन में जो भी दिल्ली से लोग आते थे, पूरी दिल्ली से, सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं, जो भी लोग वहाँ पर आते थे प्रिस्क्रिप्शन देते थे डॉक्टर की, वहाँ से वो फैबी फ्लू लेके चले जाते थे फ्री में. अब यहाँ से एक व्यक्ति अगर कुछ खरीद के अगर लोगों को जिनको नहीं मिल रही उनको अगर फ्री में दे रहे, तो यहाँ कैसे वो होर्डर हो गया, कैसे वो ब्लैक मार्केटर हो गया. अगर उसको आप ब्लैक मार्केटर और होर्डर कहते हैं तो आई एम एब्सोल्युटली फाइन टू डू दैट. पीपल कैन कॉल मी बाय वॉट एवर नेम्स. आज भी मैं वो केस लड़ रहा हूँ. आज भी ड्रग कंट्रोल बोर्ड कहती है कि हम आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत अच्छा काम करो, लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर है. आप मुझे बताइए क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? क्या वैक्सीनेशन हमने अपनी जेब से 20,000 लोगों को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को वैक्सीनेशन लगाई. प्रधानमंत्री जी ने तो पूरे देश में लगाई, लेकिन उस वक्त पे हमने अपनी जेब से हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके, धर्मशाला हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके अपने ऑफिस में मेडिकल कैंप लगाया. सबको वहाँ पर जितने लोगों को हम अपनी जेब से लगा सकते थे, 20,000 लोगों, जिनका हमारे पास डेटा भी है, वो लगाया वहाँ पर कि कम से कम मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिल रही उनको वहाँ मिल जाए. हमने राशन किट्स बांटी. आप इमेजिन करिए, मैं ये कहूँगा सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने राशन किट्स नहीं बांटी, हमने सेक्स वर्कर्स को भी बांटी. GB रोड में भी जाके बांटी. GB रोड से हमारे को फ़ोन आया कि हमारे पास राशन नहीं है, हमारे पास खाने को नहीं है. हमने वहाँ पर भी बांटी. इफ़ आई वुड हैव प्लेड बाय द रूल्स ऑफ द गेम, आई वुड हैव सेड कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो नहीं आते ये लोग, ये तो ओल्ड दिल्ली में आते हैं, मेरा क्या मकसद है. लेकिन उस टाइम पे पॉलिटिक्स करनी ज़रूरी नहीं थी, इंसानियत दिखानी ज़्यादा ज़रूरी थी. तो इसलिए आई डोंट प्ले बाय द रूल्स ऑफ द गेम एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद इट. अगर जब तक वो मेरे को फ़ायदा नहीं दे रहा, अगर वो लोगों को फ़ायदा दे रहा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? What about that कूड़े का पहाड़ which is in your area? That's horrible. It's horrible. When are you going to do something Gazipur about it? It's landfill. horrible. Gazipur The landfill. मतलब आप इमेजिन करिए, और मैं ये बहुत इंटरव्यूज़ में बोल भी चुका हूँ कि वो सिर्फ दिल्ली का या मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कूड़ा वहाँ नहीं जाता. दैट इज़ एशियाज़ बिगेस्ट लैंडफिल. इट्स अ ब्लैक स्पॉट ऑन द कंट्री. क्योंकि ये सिर्फ हमारे देश में सबसे बड़ा लैंडफिल नहीं है, पूरी एशिया का सबसे बड़ा लैंडफिल है. और सबसे बड़ा चैलेंज था वो. और मैं कम से कम 10 या 11 बार गया हूँ वहाँ पर. मतलब मेरे से पहले कोई नहीं गया वहाँ पर. मुख्यमंत्री पिछले 9 साल में एक बार ही गए NCD इलेक्शन से पहले, एक बार, और उसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश करी. क्या ज़रूरत है आपको? वहाँ पर हज़ारों लाखों परिवार रहते हैं, वहाँ पर हज़ारों लाखों बच्चे रहते हैं वहाँ पर. मैं अपने बच्चों को एयर प्योरीफायर में रख सकता हूँ, मैं अपने बच्चों को मिनरल वाटर
दे सकते। जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है। वो किस तरीके का पानी पीते हैं, वो किस तरीके की हवा में सांस लेते हैं, तो वो तो हम सबका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी ना उस लैंडफिल को ख़त्म करने की। वहाँ पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कूड़ा तो नहीं जाता, वहाँ पर तो आम आदमी पार्टी का भी कूड़ा जाता है, वहाँ पर तो कांग्रेस के घर का भी कूड़ा जाता है। आप वो कहते हैं कि ये बीजेपी की देन है। नहीं, बट व्हाट इज द सिटीजन सपोज्ड टू डू? किसके पास जाए वो? देखिए, मैं आपको सच कह रहा हूँ कि 30 से 40 मीटर पहाड़ वो नीचे आया था। हमने वहाँ पर 20 ट्रॉमल मशीन इंस्टॉल करी थी। जब मैं पहली बार वहाँ पर गया था तो वहाँ पर सिर्फ एक ट्रॉमल मशीन थी। जब थी 20 ट्रॉमल मशीन्स हम इंस्टॉल कर चुके थे। डे एंड नाइट इट वाज वर्किंग देयर। So you can't do anything because Now because MCD the is now MCD is under gone, yes, Aam the Aadmi Party. MCD has gone to Aam Aadmi Party. Now it is not in my hand. Ultimately, MCD ने So काम what करना can a MP do if the See, MP can only create awareness. उस टाइम पे मेरे पास, जब हमारे पास MCD थी, तो मैं अर्बन डेवलपमेंट कमेटी में जाके MCD कमिश्नर को आई कुड फोर्स कि भाई ये काम करना है। तभी तो जैसे मैंने आपको बोला, जब पहली बार गया था तो एक ट्रॉमल मशीन थी। जब MCD हमारे पास थी तब 20 ट्रॉमल मशीन हमने इंस्टॉल करी थी। 30 से 40 मीटर वो पहाड़ नीचे आया था। जब मेरी LG साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम अगले 4 या 5 साल में पूरा पहाड़ ख़त्म कर देंगे। एंड इट वुड हैव बीन प्रॉब्ली द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ कि एक पहाड़, एशिया का सबसे बड़ा लैंडफिल अगर ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर आज आपके पास MCD नहीं है, नाउ इट इज़ आम आदमी पार्टी इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। you've done also that कूड़ा घर you वो मैं remodeled it. यस, आपने ये विजन मैं दिल्ली की जनता को देना चाहता था। और ऐसे देना चाहता था कि जो कूड़ा ढलाव का, जहाँ पर कूड़ा गिरता था, जैसे वो खाली या ख़त्म होते जा रहे थे, जैसे खाली होते जा रहे थे, तो हमने वहाँ पर 5 कूड़े घर को कन्वर्ट करके 5 कम्युनिटी किचन्स बनाए। एक सबसे बड़ा जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कूड़ा घर था, वहाँ पर हमने लाइब्रेरी बनाई, अपने पैसे से बनाई। और आप चीज़ कहना चाहूँगा, इट इज़ लॉट ऑफ पीपल